Good morning, students. Let's start exercise 7.2 of chapter Cubes and Cube Roots. Question is, find the cube root of numbers by prime factorization method. हमें numbers given है, उनका हमें cube root बताना है और prime factorization method से बताना है. Prime factorization method आपको आता ही है. Prime factors से हमें divide करते जाना है. सबसे पहले 64 2 से डिविजिबल है. 2 3s are 2 2s are 2 1s are 2 6s are 2 8s are 2 4s are and 2 2s are and 2 1s are. इस तरह से 64 को हमने प्राइम फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिखना है. देखो 64 क्या है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 6 टाइम्स है. हमने 6 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है 2 को. ग्रुप ऑफ थ्रीज बनाएंगे. ग्रुप ऑफ थ्रीज हो गया. तो अब हम इसको क्या कह सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ 64. अब ये है क्यूब रूट ऑफ 64. अगर हम 3 लगा देते हैं तो ये साइन बन जाता है क्यूब रूट का. क्यूब रूट ऑफ 64 इज 2 मल्टीप्लाई 2. जो ग्रुप ऑफ 3 था उसमें से हमें सिंगल ले लेना है. 2 ले लिया यहां से और यहां से भी 2 ले लिया. तो क्यूब रूट ऑफ 64 इज 4. इस तरह से आंसर आ जाएगा आपका. अब हम करेंगे 512. It is divisible by 2 because last digit is 2. 2 2s are 4, 2 5s are 10, 2 6s are 12. अब देखिए, again it is divisible by 2 because last digit is 6. 2 1s are, 2 2s are, 2 8s are. It is divisible by 2, 2 6s are, 2 4s are. It is also divisible by 2. Again 2, again and again and again and again. Now 512 is equal to 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2. It means 9 times है. ये हमारा हो गया 6 times. 7 8 and 9. ग्रुप ऑफ थ्रीज बनाइए. ये आ गया. नाउ क्यूब रूट ऑफ 512 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2. एक 2 यहां से लेना है, नेक्स्ट यहां से और नेक्स्ट यहां से. 2 2s are 4, 2s are 8. क्यूब रूट ऑफ 512 इज 8. नाउ थर्ड पार्ट इज 10,000 हमें बताना है क्यूब रूट ऑफ 10,648. It is divisible by 2 because last digit is 8. 2 5s are 10, 2 3s are 6, 2 2s are 4 and 2 4s are 8. It is also divisible by 2 because last digit is 4. 2 2s are 4, 2 6s are 12, 2 6s are 12 and 2 2s are 4. It is also divisible by 2. 2 1s are, 2 3s are, 2 3s are and 2 1s are. Now it is not divisible by 2. अब 3 से चेक करें. 1 plus 3 4, 4 and 3 7 and 1 8. 8 is not divisible by 3, so 1331 is not divisible by 3. 5 से भी divisible नहीं है because last digit 5 या 0
नहीं है। 7 से चेक करें, 7 1s are 7 9s are 63, 1 रिमाइंडर आ जाएगा। 7 से भी डिविजिबल नहीं है। 8 से भी हम चेक ही नहीं करना। क्यों नहीं हमने चेक करना? बिकॉज 8 9 10 आर कंपोजिट नंबर्स, दे आर नॉट प्राइम नंबर्स, तो हमें 8 9 10 से चेक ही नहीं करना। 11 से देखें, ये 11 से डिविजिबल है। 11 1s are 2 remainder 23, 11 2s are 22, 1 1 11, 11 1s are 11. It is again divisible by 11, 11 1s are and 11 1s are. 11 is also divisible by 11, so 11 1s are. Now 10,648 is equal to 2 into 2 into 2 into 11 into 11 into 11. Cube root of 10,648 is equal to 2, because ये ग्रुप है 3 का, एक 2 हमें यहाँ से लेना है, दूसरा 11 यहाँ से लेना है, तो क्यूब रूट ऑफ 10,648 is 22. Now fourth part is 27,000. 27,000, because last digit is 0, so it is divisible by 2. 2 1s are, 2 3s are 6, 2 5s are 10, 0 0. Again it is divisible by 2. 2 6s are 12, 15 हुआ, 2 7s are 14, 2 5s are 10, 0. Again 2 से जा रहा है ये, 2 3s are, 2 3s are, 2 7s are 14, 2 5s are. Now it is not divisible by 2. 3 से check करिए, 3 and 3 6 and 7 13 and 5 18. It means it is divisible by 3. 3 1s are, 3 1s are, 3 2s are 6, 3 5s are. Now it is also divisible by 3. 3 3s are 9, 3 7s are 21, 3 5s are. It is also divisible by 3. 3 1s are, 3 2s are, 3 5s are. Now it is not divisible by 3, it is divisible by 5. 5 2s are, 5 5s are. 5 5s are, now 5 1s are. अब ये क्या है? 27,000 is equal to, ये रब कर रही हूं, 2 multiply 2 multiply 2, 3 multiply 3 multiply 3, 5 multiply 5 multiply 5. Now group of 3's. Now cube root of 27,000 is equal to 2 into 3 into 5. 2 3s are 6, 5s are 30. Cube root of 27,000 is 30. Now fifth part is 15,625. 3 से चेक करें पहले, 2 से तो डिविजिबल है नहीं, बिकॉज लास्ट डिजिट इज 5. 1 and 5 6, 6 and 6 12 and 2 14 and 5 19. 3 से डिविजिबल नहीं है, तो 5 से करेंगे. 5 3s are 15, 5 1s are, 5 2s are 10 and 5 5s are 25. Again 5 से डिविजिबल है. 5 6s are 30, 5 2s are 10, 5 5s are 25. Again 5 से डिविजिबल है. 5 1s are, 5 2s are, 5 5s are. Again ये 5 से डिविजिबल है. 5 2s are 10 and 5 5s are 25. 5 5s are and 5 1s are. 15,625 is equal to 5 multiply 5 multiply 5 multiply 5 multiply 5 multiply 5. Now group of 3's.
cube root of 15,625 is 5 multiply 5, that is 25. So cube root of 15,625 is 25. ग्रुप ऑफ थ्रीज किए, उसमें से हमें एक एक नंबर ले लेना है. नाउ सिक्स्थ पार्ट इज, आप वीडियो पॉज करके पहले खुद ट्राई करेंगे, फिर टैली करेंगे. 13,824. It is divisible by 2 because last digit is 4. 2 6s are 12, 1 8 18, 2 9s are 18, 2 1s are, 2 2s are. Again it is divisible by 2, 2 3s are, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 6s are 12. Again it is divisible by 2, 2 1s are, 2 7s are 14, 2 2s are, 2 8s are. Again 2 से जा रहा है, 2 8s are 16, 2 6s are 12, 2 4s are, 2 4s are, 2 3s are, 2 2s are, 2 2s are, 2 1s are, 2 6s are, 2 1s are. अब यहाँ मिस्टेक नहीं करनी, 2 1s are और 2 8s are 16 नहीं करना. 1 की टर्न है, 2 1s are 2, 1 नहीं जा रहा, 0, 2 8s are 16, 2 5s are, 2 4s are, 2 2s are, 2 7s are 14. ये आ गया आपका. 3 से डिविजिबल है, 3 9s are, 3 3s are, 3 1s are. इसको हम यहां कर लेते हैं, फिफ्थ रब कर देती हूं. 13,824 को हम कह सकते हैं 2 multiply 2 multiply 2, 2 multiply 2 multiply 2, 2 multiply 2 multiply 2, 3 multiply 3 multiply 3. देखिए 6 7 8 9 टाइम्स 2 है, हमने 9 टाइम्स लिखा, 3 टाइम्स 3 है. अब ग्रुप ऑफ थ्रीज बना लीजिए. अब क्यूब रूट बता सकते हैं. 2 multiply 2 multiply 2 multiply 3, that is 2 2s are 4, 2s are 8, 3s are 24. Cube root of 13,824 is 24. Now seventh part. Seventh part is 1,10,592. It is divisible by 2 because last digit is 2. 2 5s are 10, 2 5s are 10. Now 2 2s are 4, 2 9s are 18, 2 6s are 12. Last digit is 6, so it is divisible by 2. 2 2s are 4, 15 हो गया, 2 7s are 14, 12 हो गया, 2 6s are 12, 2 4s are 8 and 2 8s are 16. It is also divisible by 2. 2 1s are, 2 3s are, 2 8s are and 2 2s are and 2 4s are. Again it is divisible by 2. 2 6s are 18, 2 6s are 12, 1 remainder 18, 2 9s are 18, 2 1s are and 2 2s are. 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10 and 2 6s are 12. 2 1s are, 2 7s are 14, 2 2s are, 2 8s are. Again it is divisible by 2. 2 8s are 16, 2 6s are 12, 2 4s are 8. 2 4s are 8, 2 3s are 6, 2 2s are 4. 216. यहाँ
यहाँ कर लेते हैं 216. It is also divisible by 2. 2 ones are 0 आ जाएगा. 1 is not divisible by 2. So 0. 2 zeros are 0. 1 remainder. 16. 2 eights are 16. 2 fives are 10. 2 fours are 8. 2 twos are 2 sevens are. Now 27 is divisible by 3. 3 nines are. 3 threes are. 3 ones are. Now prime factors देखिए. 2 multiply 2 multiply 2. 2 multiply 2 multiply 2. Now 2 multiply 2 multiply 2. 2 multiply 2 multiply 2. 3 multiply 3 multiply 3 multiply 3. Now group of threes. Cube root of 1,10,592 is 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 multiply 3. 2 twos are 4, 2s are 8, 2s are 16, 3s are 48. Cube root आया हमारा 48. Now 8th part is 46,656. It is divisible by 2 because last digit is 6. Two twos are, 2 threes are 6, 2 threes are 6, 2 twos are 4, 2 eights are 16. It is also divisible by 2. 2 ones are, 2 ones are, 2 sixes are 12, 2 sixes are 12, 2 fours are 8. Now it is also divisible by 2. 2 fives are 10, 2 eights are 16 and 2 threes are 6 and 2 twos are 4. Again it is divisible by 2. 2 twos are, 2 nines are 18, 2 ones are, 2 sixes are 12. It is also divisible by 2. 2 ones are, 2 fours are 8, 11 हुआ, 2 fives are 10 and 2 eights are 16. 2 sevens are 14, 2 twos are 4, 2 nines are 18. Now 729. 729 2 से डिविजिबल नहीं है. 3 से डिविजिबल है. 3 twos are 6, 3 fours are 12, 3 threes are 9. 3 eights are 24, 3 ones are 3. 3 twos are, 3 sevens are 21. 3 nines are 27, 3 threes are and 3 ones are. Now 46,656 is 2 multiply 2 multiply 2. 2 multiply 2 multiply 2. Multiply 3 multiply 3 multiply 3. Multiply 3 multiply 3 multiply 3. Now एक एक नंबर ले लेंगे इसमें से, वो क्यूब रूट आ जाएगा. 46,656 is 2 multiply 2 multiply 3 multiply 3. That is 2 twos are 4, 4 threes are 12 and 12 threes are 36. Now ninth part is 1,75,616. It is also divisible by 2 because last digit is 6. जिसको इस तरह से करना ना आए, नंबर बड़ा लगे, आप डिवाइड करके देख सकते हैं. 2 8s are 16, 1 15, 2 7s are 14,
1 6, 2 8s are 16, 2 zeros are 2 8s are 16. It is also divisible by 2. 2 4s are 8, 2 3s are 6, 2 9s are 18, 0, 2 4s are 8. 2 2s are 4, 2 1s are 2, 1 remainder 19, 2 9s are 18, 2 5s are 10, 2 2s are 4. Again it is divisible by 2. 2 1s are 0 आ जाएगा, 19 हुआ, 2 9s are 18, 15, 2 7s are 14, 2 6s are 12, 2 5s are 10, 2 4s are 8, 17, 2 8s are 16, 2 8s are 16. 2 2s are 2 7s are 14, 2 4s are 2 4s are. It is also divisible by 2. 2 1s are 2 3s are 6, 2 7s are 14, 2 2s are. It is also divisible by 2. 2 6s are 12, 2 8s are 16, 2 6s are 12. 2 3s are, 2 4s are, 2 3s are. Now 343. Now 343. 343 is not divisible by 2. It is not divisible by 3 also. Now 5 से चेक करें, 5 and 0 है तो वो 5 से भी नहीं जा रहा, 5 and 0 है नहीं लास्ट डिजिट. अगर लास्ट डिजिट 5 या 0 होता तो 5 से डिविजिबल होता. अब 6 से करना नहीं क्योंकि 6 कंपोजिट नंबर है. नाउ 7 से चेक करते हैं. 7 4s are 28, 6 remainder 63, 7 9s are 63, 7 7s are 49 and 7 1s are 7. Now 1,75,616 is equal to, देखिए 3 6 9 times 2 है और 3 times 7 है. ग्रुप्स बना लीजिए. ग्रुप्स बन गए तो क्यूब रूट ऑफ 1,75,616 is 2 multiply 2 multiply 2 multiply 7. 2 2s are 4, 4 2s are 8 and 8 7s are 56. So cube root of 1,75,616 is 56. Now 10th part is is 91,125. It is not divisible by 2 because last digit is 5. 3 का divisibility टेस्ट चेक कर लेते हैं. 9 plus 1 10, 10 and 1 11, 11 and 2 13, 13 and 5 18. 18 is divisible by 3. So 91,125 is also divisible by 3. 3 3s are 9. अब 1 नहीं जा रहा. 3 zeros are 11 हो गया. 3 3s are 9. 2 remainder 22. 3 7s are 21. 15. 3 5s are 15. It is also divisible by 3. 3 1s are, 3 1s are, 3 2s are and 3 5s are. It is also divisible by 3. 3 3s are 9. 1 remainder 11 हुआ. 3 3s are 9. 2 2 22. 3 7s are 21. 15. 3 5s are 15. It is also divisible by 3. 3 1s are, 3 1s are, 3 2s are, 3 5s are. It is also divisible by 3. 3 3s are 9. 2 remainder 22.
3 7s are 21, 3 5s are 50. Again it is divisible by 3. 3 1s are, 3 2s are 6 and 3 5s are 50. Now it is not divisible by 3 because 1 plus 2, 3 plus 5, 8. Now it is divisible by 5. 5 2s are 10, 5 5s are 25. 5 5s are 25. 5 1s are 5. It means 91,125 is 3 multiply 3 multiply 3 multiply 3 multiply 3 multiply 3 multiply 5 multiply 5 multiply 5. देखिए 6 times 3 है और 3 times 5 है. ग्रुप ऑफ 3 हो जाएगा. तो क्यूब रूट ऑफ 91,125 is 3 into 3 into 5. It means 3 3s are 9, 9 5s are 45. Cube root of 91,125 is 45. तो ये है प्राइम फैक्टराइजेशन से क्यूब रूट. अब ये कैसे आया कि हमने एक एक क्यों लिया? स्क्वायर रूट में हम क्या लेते थे? पेयर लेते थे और पेयर में से हम नंबर एक ले लेते थे. यहाँ हम ग्रुप ऑफ 3s ले रहे हैं क्योंकि क्यूब रूट की बात है. तो रीजन क्या है? देखिए इसी में ही बता देती हूँ. जैसे 91,125 इसका मतलब क्या है? 3 क्यूब 5 क्यूब. इट मीन्स इसको आप क्या कह सकते हो? 3 into 3 into 5 होल क्यूब. ये इक्वल है 91,125 के. अब हम अपना क्यूब रूट निकालने के लिए क्या कर सकते हैं? यहाँ क्यूब रूट लगाया और यहाँ भी क्यूब रूट लगाया और ये क्यूब रूट इस क्यूब से कट जाएगा और ये क्यूब रूट हमें चाहिए ही. इसलिए 3 multiply 3 multiply 5 that is 45. हर सम में ये रीजन है जो हम एक एक नंबर लेते हैं क्योंकि ये क्यूब जो है क्यूब रूट से कट जाता है. तो प्राइम फैक्टराइजेशन से क्यूब रूट ऐसे निकाला जाता है. फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं. थैंक यू.